Friends, Namaste. Hello and welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In this video, we shall discuss about Bao Dhan, that is a high export potential red rice from Assam state of India. So first, recently we are more excited about the red rice where we got the news that the first consignment of red rice was flagged off to United States of America and the news was on 4th March 2021. So in this lecture or video, we shall discuss about what is red rice, how it is ground, where it is ground, how it is different from other kinds of rice, then the apeda which is responsible for export of any kind of products from India, along with that submergence rice and some of the related facts we shall discuss in this particular video. When we talk about the exports, we get excited because as India is already highly populated, that is the second most populated country in the world, we are basically dependent on the imports. That means from the independence, the country was dependent on the imports for different crops. But when the fact comes to exports, we feel proud and we feel better that our country's GDP and the production is going to increase. That means the country is growing and we may shortly shift from developing country to developed country as well. Hope for that. So we were talking about red rice. The red rice is being sourced by leading rice exporter LT Food. LT Food is one of the private company. So here two bodies comes to picture, that is APEDA and another is REPF. APEDA is Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. We shall discuss about it in elaborate way in the further slides. Then Rice Export Promotion Forum, which is responsible for the export of different kinds of rice, especially the red rice from India. So particularly when we talk about the red rice growing area, that is the map represents the Assam region. In the Assam region, particularly we shall see the Brahmaputra valley. This is the Brahmaputra region. Along the river belt, this particular red rice is ground. So now the thing comes that what is red rice? As you may see, if the rice is less polished means we can call it as red rice. Is it so? No, not exactly. Partially we can say yes, but not exactly. Okay. So when the red rice, may be any multiple varieties of rice that are high in anthocyanin, an antioxidant pigment that dyes the bran of the rice grain a reddish color. Okay. So here in this picture you may see the anatomy of grain. The outer husk, this is the outer husk where the bran is the inner portion of that particular husk. This bran is containing high amount of fiber, vitamin B and minerals. If we are removing the bran portion means we are losing fiber, vitamin B and minerals. As in India, we highly prefer the white colored rice. That means we are losing all these kinds of nutrients. The other two things present in the rice grain are germ and endosperm. If we are going for high polishing process and removing the bran means partially we are losing germ and we will get the endosperm intact. Germ also consists of vitamin B, then vitamin E, minerals and phytochemicals. Partial removal of germ also responsible for the destroying many of the nutrients. So red rice is a variety of rice that is colored with anthocyanin content, as I have already told, that it is usually eaten unhulled or partially hulled and has a red husk rather than the more common brown. Red rice has a nutty flavor, that means the flavor is also somewhat different compared to polished rice. It has the highest nutritional value of rice eaten with the germ intact.
Now we shall talk about the Assam red rice. Before that, we shall see that how the rice export potential has increased over the years. As you know, a few years back or in the recent years, we were more talking about the basmati rice export potential. India is exporting more basmati rice to the Gulf countries. But in the recent year, that means within 1 or 2 years, we are also focusing on the non basmati kind of rice varieties. That means we are somewhere positioned in a upper level, means we are not only focusing on the high extent valued products, but also on the other things also side by side. The Commerce Ministry of India said that the non basmati rice exports of India have increased up to 26,058 crore from the month of April to January 2020-2021, as compared to the exports of rupees 11,543 crores for the same period in the fiscal year 2019 to 2020. That means about 15,000 crores was increased within a single year of non basmati type. So, we were discussing about the Assam red rice. So, why it is red? Because it is rich in iron content. It is grown in the Brahmaputra Valley of Assam without the use of any chemical fertilizers. Note it down, without the use of any chemical fertilizers. The first thing is there is less scope for using chemical fertilizers, because as you know, the Bao Dhan or red rice grown in Assam region is grown under the submerged conditions. That means up to 2 meter growth we can expect in a particular season. If we are providing the chemical fertilizers also is of no use, because everything will be washed off. So neem coated urea is used in certain conditions to enhance the production. Baodhan is a deep water rice. It is cultivated on low swampy lands and flood prone areas. The rice having high content of iron, protein, vitamins, magnesium, phosphorus, selenium, thiamine, niacin, manganese, and high in fiber. There are several varieties of bao rice in Assam region only, like Neghari bao, Dal bao, Panindrand Mughari bao, then Padmatai, Panikekai, Padmanath, Sabita, Rongi Boy, Bao, then Badal, etc. Bao rice growing areas are Dhemaji, Lekhimpur, Sabsagar districts, and Majuli, etc. That means these are the major districts growing bao rice or red rice in Assam. So let us discuss the difference between red rice and other kind of rice. As you know, if there are more number of colors in any particular kind, we may call it as rainbow. In rice also we may expect somewhat similar kind of thing, like we are having white rice, brown rice, black rice, red rice, like that based on the color. So what is white rice? As in our daily day-to-day diet, we prefer white rice, especially the South Indians. In our daily diet, we highly prefer white rice, which is higher in glycemic index, which means your body breaks down the white rice more quickly. If you eat chapati and rice, white rice gets digested quickly as compared to chapatis. That means the glycemic index is high. White rice is also lower in fiber. That means if we are removing the the outer husk, that means we are losing most of the nutrients along with fiber content. So this leads to keeping you feeling full for longer. Means if fiber is there, we'll feel that we are full for longer time. If not, the things are carbohydrates breaks down very quickly and we feel hungry after certain time. White rice tend to contain less vitamins and minerals. If we are choosing white rice, means it is better to go for basmati rice, which is a better option. Then coming to brown rice. Brown rice is not much different from red rice, but better than white rice. Black rice is in between brown rice and red rice. Black rice, which is having nuttier and
stronger flavor compared to white rice. And in terms of nutrition, black rice sits in between brown and red rice. This tends to have a lower glycemic index, so it is more slow releasing and take longer to digest. It is also high in iron and protein than others. Then red rice, this is become more popular and available in last few years and with good reason. It's arguably the most nutritious rice variety to eat. Red rice contains anthocyanin. We often think that anthocyanin is rich in blueberries and other red purple fruits and vegetables. The fact that red rice contains anthocyanin is a big positive, and we can get better nutrients from this. So now the question arises, which rice is best? Among the four, I may say that red rice is the best because as comparing to others, it is having all kinds of nutrients, and here it is also compared to the blueberries or any kind of colored vegetables and fruits which are having high anthocyanin content. So this is assignment for you. Just let me know what is the function of anthocyanin in human body, to which all disorders or diseases it may help to overcome the particular things. Okay, so I already discussed about brown rice and different colors of rice is given here. Now we shall discuss the type of red rice. We were discussing about the Assam red rice. Assam red rice is particularly Baodhan. But apart from that, the different species like Oryza longistaminata, Oryza punctata. Oryza punctata is red rice, also known as weedy rice, a low yielding rice variety that persists as a weed in fields of better quality rice. Then Raksha, Raktashali, which is a rare variety of rice. Thai red cargo rice, which is a non-glutinous long grain rice variety which can be eaten with the help of chopsticks. Bhutanese red rice, a medium grain rice grown in the kingdom of Bhutan in the eastern Himalayas. Then Kamargu red rice, which is relatively new variety of rice cultivated in the wetlands of Kamargu region of southern France. Matta rice, which is very popular in Kerala Matta, also known as rose matta rice, palakkan matta rice, Kerala red rice, red parboiled rice, which is indigenous variety of rice grown in Palakkad district of Kerala. It is popular in Kerala as well as Sri Lanka, where it is used for idlis and appams and eaten plain. Along with that, in Philippines region, we are having ulikan or mini angan. If we talk about Karnataka, we have rajamodi, which is a highly nutritious rice kind. Now we shall discuss about the two bodies which are responsible for the export of rice from India, or APEDA, the body which is responsible for export of almost all the products from India, especially the imports of sugar as well. So APEDA is the Apex Export Trade Promotion active government body. The body was set up by the Ministry of Commerce and Industry. It was set up under APEDA Act. The act was passed in December 1985, but came into force in February 1986, and the present chairman of APEDA is Dr. M. Angamuthu. Next is Export Rice Export Promotion Forum. दिस वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट द राइस एक्सपोर्ट्स, मतलब इसको बोल सकते हैं कि अपेड़ा का बच्चा है. ओके, द फोरम टेक्स अप द कोलैबोरेटिव स्टेप्स so as to identify and document particulars. It also reaches out to the stakeholders along the entire production or supply chain of export of rice. In this way, it enhances the export of global market. REPF comprises representatives of different exporters, officials from APEDA, rice industry, Ministry of Commerce, directors of agriculture from the major rice producing states like Uttar Pradesh, Punjab, West Bengal, Telangana, Haryana, Assam, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़. इसका मतलब है जो भी मेजर राइस ग्रोविंग स्टेट्स ऑफ इंडिया है, जिसके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं, वो सब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं REPF के. ओके, so now we shall discuss about the functions of APEDA.
तो अपेडा क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू द scheduled products for export by way of providing financial assistance or otherwise for undertaking survey and feasibility studies, participation in inquiry capital through joint ventures and other reliefs and subsidy schemes, registration of persons as exporters of the scheduled products on payment of such fees as may be prescribed, then fixing the standards and specifications of the scheduled products for the purpose of export, carrying the inspection of meat and meat products in slaughterhouses, processing plants, storage premises, conveyances, or other places where such products are kept or handled for the purpose of ensuring the quality of such products. मतलब मीट कटिंग से लेके उसके मार्केटिंग तक अपेडा केयर लेता है. Improving the packaging of scheduled products, improving marketing, then export, along with collection of statistics from the owners of factories or establishments engaged in the production, processing, packaging, marketing, or export of the scheduled products, or from such other person as may be prescribed, or any matter relating to the scheduled products, and publications of the statistics so collected and of any portions thereof or extracts therefrom. Training in various aspects, ये सब अपेडा के फंक्शंस है. देन प्रोडक्ट्स मॉनिटर्ड, तो ये कौन सा प्रोडक्ट मॉनिटर करता है, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, बेकरीज, हनी, जैगरी, शुगर, कोको एंड इट्स प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल बेवरेजेस, सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, ग्राउंडनट, वालनट्स, pickles, papad, chutney, gorgum, floriculture and floriculture products, देन हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स. जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका सब एक्सपोर्ट और स्पेशली शुगर का इंपोर्ट मॉनिटरिंग का काम अपेडा करता है. कमिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ अपेडा अथॉरिटी, हियर कौन से बॉडी से अपेडा के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मैंने सब लिस्ट आउट किया है. सो चेयरमैन होता है, देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्स ऑफिशियल होते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट होते हैं. 1 मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नीति आयोग से एक मेंबर होता है. देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ होम 2 आर इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल एंड 1 बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. उसके साथ 8 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट मिनिस्ट्री से, लाइक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, फूड, सिविल सप्लाई, सिविल एविएशन, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट. इसके साथ 5 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं बाय रोटेटिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब 5 स्टेट से 5 मेंबर को चुना जाता है और उनको रोटेशन पे चुना जाता है. तो उसके साथ में इवन मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग ICAR, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसके साथ कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. उसके साथ 12 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, अदर शेड्यूल्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, फिर उसके साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री. साथ में 2 members appointed by central government from amongst specialists and scientists in the field of agriculture, economics and marketing of the scheduled products. तो कुल मिला के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में एक चेयरमैन होता है, एक डायरेक्टर होता है, सेक्रेटरी होता है. सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, डायरेक्टर अपेडा से और चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं. ऑफिस एंड स्टाफ अथॉरिटी से अपॉइंट होते हैं. तो कौन सा सेक्शन अपेडा के एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शन में वर्क करता है, दैट इज सेक्शन 7/3. याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. द टोटल सैंक्शन पोस्ट होते हैं 124. ओके, उसके साथ में हम बात करेंगे कि अपेडास प्रेजेंस. इसमें इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, 5 रीजनल ऑफिसर्स हैं एंड 13 वर्चुअल ऑफिसर्स हैं. रीजनल ऑफिसर्स है कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद एंड गुवाहाटी. So far we discussed about the 2 important bodies responsible for export of different products and राइस. अब हम बात करेंगे सबमर्ज्ड राइस.
Why we are talking about submerged rice? Because the high export potential red rice, also called as bao dhan, is the submerged rice. तो DWR भी उसको बोलते हैं, दैट इज डीप वाटर राइस अंडर फ्लडिंग कैन ग्रो अप टू 2 मीटर। इसको मैंने ऑलरेडी बताया था। रेड कर्नल एंथोसाइनिन से रिच रहता है और द मैक्सिमम एलोंगेशन पर डे होता है 25 सेंटीमीटर। ब्रांचिंग डज नॉट टेक प्लेस एज द वाटर लेवल राइसेस, मतलब जैसे ही बारिश का लेवल ज़्यादा होता है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीजेस, तो क्या होगा, ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगा, एलोंगेशन ज़्यादा हो जाएगा। ब्रांचिंग नहीं होता है, एलोंगेशन ज़्यादा होता है। पुअर टिलरिंग अंडर सबमर्जेंस। अगर आप अपलैंड कंडीशन में देखेंगे, यू मे फाइंड मोर नंबर ऑफ टिलर्स, 25, 30, 35, like that you may find more number of tillers, but under deep water or submerged conditions the tillering won't be that much. डीप वाटर राइस ग्रोविंग सिर्फ असम के लिए लिमिटेड नहीं है। मैनी स्टेट्स में डीप वाटर राइस, जैसे कि जहाँ भी ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन है या कई गंगा रिवर रीजन में भी डीप वाटर राइस को ग्रो किया जाता है और इसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है। वाई, एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, वाई अमेरिका इज और यूएसए इज प्रिफरिंग द रेड राइस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेल्ट, बिकॉज the western world is more concerned about their health things and health consciousness. Okay, so first thing है, red rice is rich in iron and different vitamins and minerals. along with that it is grown organically, मतलब बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड डाइट फॉलो करने के लिए ये हेल्प करेगा। द एवरेज यील्ड बहुत ही पुअर होता है, रेंजिंग बिटवीन 1.5 to 2 tons per hectare because of the fragile ecosystem that prevails right from seedling to harvesting stage of the crop. DWR displays stem elongation or tolerance to submerging along with kneeing ability upon receding flood water. Due to poor economic conditions of the farmers along with a little scope for applying the fertilizer due to water stagnation, cultivation is default organic in nature. Plants that grown under normal water condition show rapid tillering, जैसे मैंने बताया था। ब्रांचिंग डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे बिलो सरफेस वाटर ए फ्यू नोड्स स्टार्ट forming branches when the water level stabilizes. Branching increases with warm water during summer months along with prolonged submergence. Adventitious roots first develop from the uppermost nodes below the water surface and are capable of extracting nutrients from the water. मतलब देखिए यहाँ पे जो एडवेंटिशियस रूट्स, जैसे आप जानते हैं कि सीरियल्स में एडवेंटिशियस रूट होता है और पल्सेस में टैप रूट, मतलब डाइकॉट एंड मोनोकॉट का एनाटॉमी आप जानते ही हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं ये सॉइल में तो टिकेंगे नहीं, बिकॉज द वाटर विल बी फ्लोइंग कंटिन्यूसली, एंड दिस पर्टिकुलर प्लांट, मतलब ये हाइड्रोपोनिक्स के तरह वर्क करता है एंड इट ड्रॉज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर. As the plant grows underwater, the first node develops a few coarser and unbranched roots. Interestingly, DWR has a greater number of leaves, longer panicle, and large number of spikelets per panicle compared to crop grown without deep water situation, indicating their hydrophilic nature. मतलब water loving होते हैं. Elongation of internode is faster before panicle emergence from post panicle emergence. In basal tillering of DWR, primary culm comes from the main culm at the base of the plant. Secondary tiller फिर आएगा, फिर tertiary and quaternary tillers आएंगे, मतलब tillering step wise होता है. They are also considered to be nutritious, मतलब बहुत सारे nutrients मिलेंगे. तो DWR हर कंडीशन से बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें डिसीज एंड पेस्ट बहुत ही कम आते हैं, बट एक ही मेजर डिसीज है, दैट इज उफ्रा डिसीज, विच इज कॉज्ड बाय राइस स्टेम नेमाटोड Dithylanchus angustus.
एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम होता है राइस में, विच कॉजेज ईल्ड लॉस अप टू 30 to 100%, मतलब पूरा भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्यू टू इन्फेक्शन द लीफ फर्स्ट टर्न्स वाइटिश एंड देन टिप्स टर्न ब्राउन, स्टेम्स बिकम distorted above the last node. There is also arrest of water and development of the ear, and severe attack lead to death of the entire plant. तो फ्रा डिसीज कंट्रोल करने के लिए अगर हम एड्रेस करेंगे, मोर रिसर्च करेंगे तो बेटर होगा। नाउ द ग्रोथ कंडीशन, इसका सोविंग करते हैं बावो धान और सबमर्जेंस राइस और रेड राइस जो भी हम बोलते हैं उसको मार्च अप्रैल में सो करेंगे। दे टेक मोर देन 300 days टू मैच्योर। सीड्स आर नॉर्मली sown डायरेक्टली इन द सॉइल एट 60 to 130 kg per hectare। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ रेड राइस। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, आयरन रिच होता है, मतलब 68.75% आयरन होता है, से कार्बोहाइड्रेट 67% अबाउट, फिर जिंक 30%, प्रोटीन 14%। यहाँ पे देखिए प्रोटीन एंड फैट परसेंट। नॉर्मल राइस अगर आप देखेंगे वाइट राइस उसमें सिर्फ 7 to 8% प्रोटीन होता है, लेकिन रेड राइस में इट इज़ अबाउट 14%। दैट मीन्स द कंटेंट ऑफ प्रोटीन इज कंपेयर्ड एज कैन बी कंपेयर्ड टू ओट्स और वीट। फिर फाइबर होता है 7.11%, पोटेशियम 5.45%। तो इससे हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट फ्री रेडिकल्स। अगर हम फ्री रेडिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बेनिफिट है? वी में कम्बैट कैंसर। कैंसर आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, उसके साथ में भी जो भी आर्टरी एंड लंग्स में प्रॉब्लम आते हैं उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। कंटेन्स विटामिन B6 which this can lower high cholesterol, help to prevent heart disease, lower blood glucose, lowers the risk of obesity, मतलब अगर आप डाइट कर रहे हैं red rice is a better option, then lowers the risk of asthma, fortified with powerful antioxidants, good for bone health। तो स्पेशली टू काइंड ऑफ बाओ राइस होता है, एक जुल बाओ एंड नघेरी बाओ, विच पॉसेस सिग्निफिकेंटली हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन कंपेयरिंग टू अदर बाओ काइंड। तो फर्दर रिसर्च क्या कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द वेराइटीज लैक हाई यील्डिंग कैरेक्टर्स, मतलब अभी अभी मार्च महीने में एक्सपोर्ट का न्यूज़ आया है, लेकिन उससे पहले ईल्ड को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्पेशल रिसर्च नहीं हुआ है, क्योंकि चल रहा है सबमर्जेंस एरिया में तो अलुवियल सॉइल रिच होता है जिसके न्यूट्रिएंट से ही इसका ग्रोथ या जो भी ईल्ड आता है उतना चल रहा है। बट फॉर द हायर ईल्ड टू ऑब्टेन तो हमें ज़्यादा रिसर्च पे कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है। Unfortunately, till today there is no systematic efforts being made to improve deep water rice. Transfer of appropriate traits from high-yielding popular genotypes to traditional DWR genotypes along with the incorporation of biotic stress tolerance genes would be an appropriate option। जैसे मैंने बताया था ओफ्रा डिसीज मेजर है तो उसको अगर एड्रेस करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। Advances could lead to enhanced tolerance level by pyramiding desirable agronomic traits to produce novel genotypes. Novel alleles, if identified for various traits related to deep water stress tolerance, will be useful for developing new varieties for flood-prone regions, not only for Assam but for the whole country as well। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि रेड राइस क्या होता है, रेड राइस और दूसरे राइस में क्या डिफरेंस है, अपेड़ा क्या होता है, फिर उसके और सब्सिडरी बॉडीज कौन से हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ अपेड़ा, अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड many things about how we can concentrate on more research. Now at the end part I just want to give some of the GI tagged products of Assam like Muga silk of Assam, तेजपुर लीची, बोका चावल, काजी नींबू, फिर जोहा राइस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, आई होप द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कीप इन द कमेंट सेक्शन। कीप ऑन liking, sharing, subscribing. Thank you for watching. Namaste.